Hello, good morning, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. It's an early Sunday morning start on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app as our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup comes to your screen. मैं हूं फख्र आलम और आप सबको सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं कि इतवार के दिन सुबह सुबह आप लोग जाग रहे होंगे जिस तरह आप हमेशा जागते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग जो हैं वो हेल्दी प्रैक्टिसेस में मुलव्विस हैं सारे के सारे मेरी तरीके से। दोस्तों, we've got a big day of cricket here today. The big game, Pakistan versus India. उसके हवाले से बहुत सारी बातें करनी है. People have a lot of questions. And before I get started, let me introduce to you my Hamnawa. Since this is a Qawwali party this morning, let's bring in the legends, the icons, the superstars, the heroes with me. The young, the dashing, looking really sharp this morning, Shoaib Malik. Good morning, Shoaib. Good morning. Next up, the wall, the Mr. Dependable, the captain, the coach, and an all-round great guy who drags me to the gym whenever he can, whenever he possibly can. Ms. Paul Haq, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम खान साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बड़े खान साहब। बस जरा थोड़ा लचक रखना है ताल में, ठीक है? मुसलसल आज सारा दिन। And next up, we've got the toe-crushing, batsman terrorizing, global golf trotting, and chappu chalaying Waqar Younis. Good morning, Waqar. Good morning, Assalamu alaikum, and love the energy from you. I love your expressions. I mean, it's just a start, bro. It's just a start. It's just a start, you know. And that warm-up होते हैं ना पहले एक दो गेम, अभी तो वो चल रहा है ना मामला सारे के साथ. And ladies and gentlemen, the king, the sultan, the man who shines bright, glows no matter where he goes, especially at 7:30 in the morning on a Sunday. Wasim Akram. Good morning and assalamu alaikum, Wasim. Walaikum assalam. Good morning, everyone. Assalamu alaikum. Good morning. I love that. Good morning, Wasim. Okay, we've got a big day. But इससे पहले कि हम आगे कहानी को लेकर चलें, जरा सबसे पहले नजर डालते हैं कल Group 1 के मैचेस हुए. Let's take a look at the Group 1 points table. This is how it went down yesterday. It was a great start. The first game up, it was. And here we go. Sunday morning है, थोड़ा चीज़ों को गर्म होने में टाइम लगता है. New Zealand right on top with that great run rate, 4.46. Their 2 points. They defeated Australia by that huge margin of 89 runs, looking amazing. England there securing their 2 points. And Afghanistan, well, they've got to score something in the games ahead. And Australia under a lot of pressure. And let's take a look at the Super 12. This is how the Super 12 groups are lined up. You know, Group 1, England, New Zealand, Australia, Afghanistan, Sri Lanka, Ireland. Today, Sri Lanka and Ireland will clash. So that's the Group 1 game that we will talk about later. But right now, we've got the Group 2 games coming up. And that's India, Pakistan, South Africa, Bangladesh, Zimbabwe, Netherlands. We've got 2 games ahead of us. We will talk. First game today that is going to happen is Ireland versus Sri Lanka. That's the first game up. ये आपकी आइडेंट आ रही है आपकी स्क्रीन पे. This is the Group 1 match this morning. It's Ireland versus Sri Lanka. And then the mother of all games, the biggest event in cricket, that is India clashing with Pakistan from Melbourne. That's at 1 o'clock. So this is going to be an exciting day. I know a lot of fans on both sides of the border, all set, ready to get going and support their teams. Let's start off with you, Waqar. What do you reckon is in the making this morning for Pakistan and India? Plenty. I mean, I don't know why you call it a mother of all games. It could be a father of all games also. I mean, okay. It is going to be a massive game. We all know that. And the entire world is waiting for this game. And I hope the weather stays good. And the teams are balanced. They're both playing really good cricket, especially Pakistan. Just recently, they played well against England also here at home, and now they, you know, in New Zealand also they won that. So that must have given them a lot of confidence, and I hope they click, which I'm sure they will. I mean, the preparation is perfect. You can't ask for more. And Shaheen is back. You know, unfortunately, I'm hearing that Fakhr is not ready yet, but I mean, we got the team in rhythm. And let's put up a good show here and in Melbourne. Yeah, very important. Wasim, the history between Pakistan and India in T20s, they've played 11 games together. 8 have been won by India, 3 by Pakistan. But one of those significant games is the jinx that we had in World Cup matches, that we'd never won
in any World Cup format, whether it was ODI or T20 against India. We broke that in Dubai, then we just recently defeated them in the Asia Cup. So the momentum in favor slightly for Pakistan right now, you think? I doubt you can say that momentum towards either side because it's a new tournament. Asia Cup happened almost a month ago, probably 3-4 weeks ago. But this is a new tournament, new conditions, new ground, the weather. So I'll give both the team, maybe India a little ahead as far as favorites concerned. But I like Pakistan to go underdogs into this big Indo-Pak game. I mean, previously हम जीते हुए हैं उनसे मैच अभी recent past में against Srilanka. So अब we know कि पाकिस्तान का combination गया हुआ है. We talk about it in length. A lot of people had been saying कि 4 fast bowler खिला लो. Stuff like that. We can also discuss that. But I think Pakistan will go with the same playing 11 they did in the previous game in Asia Cup. और जो भी न्यूजीलैंड में उन्होंने टीम खिलाई है more or less उसी के साथ जाएंगे. उससे कम्बिनेशन आपका ठीक बनता है. चौथा फास्ट बॉलर, आई अंडरस्टैंड पीपल विल से कोहली का रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, पांड्या का रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है पाकिस्तान के स्पिनर्स के खिलाफ. बट सम टाइम आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस ही बन सकती है. सो ठीक है, आज शायद शादाब का दिन हो, शायद हमारे नवाज़ का दिन हो, शायद वो 1-2 आउट कर जाएं ऊपर से. सो let's see, but exciting time ahead for World Cup. This World Cup starts from today afternoon, I reckon, as far as Pakistan India concerned. Yes, definitely. Misbah, let's talk about this venue, Melbourne. Now, what do you think? Will the toss play an important role? We know there is a weather concern, but वो weather concern जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई है. जो कल रात को जब हम देख रहे थे तो the precipitation chances were further down. Let's just hope that holds up. But other than that, what does Melbourne bring to this? देखिए, मेलबर्न स्पेशली अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में एक तो बाउंड्री डायमेंशंस इस किस्म की हैं और विकेट इस किस्म की है कि यहाँ पे स्पिनर्स का रोल है. और जहाँ तक ये बात आप टॉस की बात कर रहे हैं, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान दोनों कंफर्टेबल हैं बैट सेकंड. उनका भी कंफर्ट जोन ये है इंडिया का कि वो पहले बॉलिंग करें और फिर चेस करें. पाकिस्तान भी रिसेंटली इसी उस पर खेल रहा है. आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ टेस्ट दोनों के लिए. अगर पूरा मैच होता है कि हम क्या करें टॉस जीत के, एक सवाल होगा दोनों के जहनों में. बट इफ़ द वेदर इज़ अराउंड और उसमें मेरे ख्याल में टॉस जीत के कोशिश करेंगे कि पहले बॉलिंग करें. और मिसबा, ये जो ग्राउंड है मेलबर्न, ये लोएस्ट टोटल एवरेज जो होती है फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग वो है ये मेलबर्न. 141 इज़ द लोएस्ट स्कोरिंग ग्राउंड्स इन ऑस्ट्रेलिया. सो ये भी टीमों के जहन में होता होगा पाकिस्तान इंडिया के थिंक टैंक में कि भाई ये विकेट इज़ नॉट दैट फ्लैट जो कि यूजली होती है 1T20 में. ये भी है और मुझे लगता है कि थोड़ा बाउंड्री डायमेंशंस की वजह से भी ये है. बट आई स्टिल बिलीव कि आपको जो स्टैट हमने बाकी ग्राउंड्स के भी देखे हैं, लाजमी नहीं है कि वो जो ऑन एवरेज एक स्टैट आ रहा होता है उसी पे चलें. मैच समटाइम्स बिल्कुल डिफरेंट होता है. उस मैच में कौन सी आपको पिच मिलती है, क्या कंडीशंस हैं, उसको देखना बड़ा ज़रूरी है. जहाँ तक बात हो रही थी इंडिया पाकिस्तान की, ओवरऑल आई थिंक मुझे लगता है कि जो हमेशा पाकिस्तान पे प्रेशर होता था वर्ल्ड कप्स में, नाउ इट्स ऑन इंडिया. ओके, क्योंकि प्रीवियसली वो बाहर हुए वर्ल्ड कप से, देन एशिया कप में वो बाहर हो गया, वो फाइनल राउंड में नहीं पहुंचे, सेमीफाइनल या फाइनल तक नहीं पहुंचे. गुड पॉइंट. लूजिंग टू पाकिस्तान, दे विल बी अंडर ह्यूज प्रेशर. दे वांट टू विन दिस गेम. सो ये जब सिचुएशन आपकी होती है जो प्रीवियसली पाकिस्तान की होती थी, आप अपनी कहीं ना कहीं आपकी गेम उसमें से मेंटली उस ब्लॉक से निकलना वो इतना आसान नहीं होता. तो कहीं पे भी अगर पहला पंच पाकिस्तान ने मार दिया उनको, चाहे वो शाहीन के ओवर है या आपकी अगर बैटिंग आती है, आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप है, दैन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया. बट आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इनिशिएटिव पहला कौन लेता है इस मैच में. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शोएब, लेट मी आस्क यू दिस, व्हाई टारगेट सेट करने में, पहले बैट करने टारगेट सेट करने में, व्हाई डज पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप gets a little confused or lost? We find them that they're not sure कि ये 180 करना है इधर या 150 करना है, तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं. ये रिसेंटली हुआ है काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान के लिए. देखिए, उसमें मेरे ख्याल में आप ये नहीं सोचे कि हमें टोटल टारगेट क्या करना है, क्योंकि हमारा जो कैप्टन है वो अप फ्रंट जाता है. और आई गेस जब कैप्टन अप फ्रंट जाता हो तो उसको वैसी आइडिया हो जाता है कि यार इस पर क्या टारगेट जो है वो सेट होना चाहिए. और नॉर्मली जो ऊपर के बैट्समैन है वो
मैसेज भेजते हैं ड्रेसिंग रूम में कि ये पिच ऐसे खेल रहा है एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन स्कोरिंग अराउंड जो भी उसके XYZ जो भी वो टारगेट बनता है। तो आई गेस बिल्कुल अपनी गेम पे रहें, ये नहीं देखें। समटाइम ऐसे होता है कि एक बैट्समैन है, उसको उसके बहुत अच्छे शॉट्स लग रहे हैं, लेकिन जो आगे जाने वाला होता है वो यही सोच रहा होता है कि यार मैं भी सेम मोमेंटम से खेलूं। नहीं, योर गेम इज डिफरेंट, assess the conditions and play accordingly. Yeah, the opening pair for Pakistan, very, very important. Both Rizwan and Babar, and a lot of dependency on them, Waqar. Will it be another Babar Rizwan show, or will the rest of the batting have to kick up their game today? I hope so. I hope they play the way they've been playing. I mean, they've been superb. 800 runs partnership, so that's the record so far. So, I mean, they're playing really, really good cricket. It's just a matter of the first few overs. If they get in, and Rizwan, the way he plays, I mean, एक को anchor role खेलना पड़ेगा और एक को थोड़ा सा positive खेलना पड़ेगा। पिच बिल्कुल true हुई जहाँ पे probably 180, 190 चाहिए होगा, तो I think थोड़ा सा aggressive खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा दलेरी से खेलना पड़ेगा, जैसा कि हमने वर्ल्ड कप में किया। We were chasing 150, I guess, somewhere around 150, and we played so positive. We were like aggressive. We just came, sort of dominate the game, and I think that's the way the mindset should be. मलिक ने उस दिन कहा था ना कि इंटेंट जो होती है ना कि आप चौका मारने जाओ, अगर गेंद मिले तो देन यू पुश इट फॉर सिंगल, बट डोंट थिंक ऑफ सिंगल ऑल द टाइम। वी डोंट वांट एज व्यूअर्स, आप लोग भी और हम भी, कि खुदा ना खास्ता अगर अर्ली ब्रेक थ्रू मिल सकता है इंडिया को, कोई दोनों में से हमारे ओपनर में से आउट हो सकता है, कि बाकी टीम प्रेशर में ना आ जाए बैटिंग में। दे शुड गो विद देयर माइंड कि जी अगर खुदा ना खास्ता ये होता भी है, सो वी आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। इंटेंट जो वकार और जो ये सारे बात कर रहे हैं हम पिछले ऑलमोस्ट 6-7 दिन से, जस्ट प्ले देयर ऑन, शेल में ना चले जाएं एकदम कि 6 में विकेट गिर गई पहली या तीसरे में गिर गई तो फिर ये बिल्कुल रोकना शुरू कर दें, गेम लंबी लेके जाएंगे। लंबी गेम में कोई फ़ायदा नहीं है। दिलेरी की बात कर रहे थे आपके, दिलेरी के साथ खेलना चाहिए। ज़रा एक स्टैट है, इस पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान का T20s के अंदर पावर प्ले के अंदर जो ये एवरेजेस, जो स्ट्राइक रेट्स हैं, सो यू गॉट इन द T20s लास्ट 1 year, बाबर आजम इज़ राइट ऑन टॉप देयर, as you can see, and then it's Mohammad Rizwan and then Shan Masood. So, yeah. but this is Pakistan team. Ji, Pakistan team. So, I mean, the only issue here is runs, plenty of runs, no doubt about that. I mean, averages, very good averages. I mean, Shan Masood has struggled a little bit recently, but it's just the strike rate, how quickly you get those runs. I think that's where the in the power play, right? in the power play. I mean, that's low. That is very low. I mean, अगर दूसरी टीमों को देखेंगे तो power play में they come hard at the bowlers. But yeah, it has worked for Pakistan, and that's purely because Pakistan's bowling is very, very strong. Right. You can maybe afford at times कि जी थोड़ा आपका strike rate नीचे हो, लेकिन against India, I feel that you have to be really, really delayed. Sure, you wanted to add something to it? Yeah. मुझे इन स्टैट्स पे सिर्फ थोड़ा सा ये है कि जब आप 150, 160 वाला मैच खेल रहे हैं तो ये स्टैट स्टिल यू कैन गेट अवे, सम हाउ द अदर यू कैन गेट टू द टारगेट। लेकिन जैसे ही आप 170 प्लस 180 प्लस वाला मैच खेलते हैं तो फिर आपको ऊपर से जो है बहुत अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए। उसका एडवांटेज ये होता है, जैसे कल हम लोगों ने देखा फिन एलन को, उसने बॉलर्स को पहले ही 6 ओवरों में डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो सारे यही सोच रहे थे पहले ओवर में वो यही सोचना शुरू हो गए थे कि यार हम लोगों ने आगे 3-3 और ओवर्स करने हैं, एक्सेप्ट एडम जैम्पा। तो मतलब ये ना, यू आर सेंडिंग द स्ट्रॉन्ग मैसेज बाकी के भी जो आपके बैट्समैन है ना, उनको भी कि यार अच्छा है मैं इनको पढ़ाऊँ, आओ डू द सेम थिंग। और आई गेस इस अप्रोच से ना बहुत पॉजिटिविटी आती है, और स्पेशली व्हेन यू गोइंग टू प्ले अगेंस्ट डिफरेंट ऑपोजिशन। ऐसा नहीं होगा कि आप बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं और एक ही टीम है तो आप प्लान कर सकते हैं, नहीं, आपको डिफरेंट टीम्स के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा। तो जो टॉप की टीम्स हैं वो जैसे क्रिकेट खेल रही हैं, हमें भी वैसे ही खेलना चाहिए। और भले मैं समझता हूँ कि हमें जब बैटिंग पहले करें तो तभी इसी अप्रोच से खेलना चाहिए, रिगार्डलेस कोई भी समटाइम आपको 180 नज़र आ रहा होता है ना चेजिंग में, तो आपको देयर इज नो चॉइस, यू हैव टू प्ले सर्टेन वे। लेकिन जब आप पहले बैटिंग करते हो तो फिर आप समटाइम ज़्यादा टाइम ले जाते हो कि नहीं हम कवर कर लेंगे पीछे बाद में,
आई थिंक वो जो एक डैमेज शुरू में अगर हो जाता है, अगर आप पहले पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं करते और विकेट भी नहीं लूज करते हो, तो वो डैमेज रिकवरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इन T20 क्रिकेट. All right, with that, we are going to take a break right here on the Pavilion. देखते रहिए. Remember that it is a big day today for cricket and for the ICC Men's T20 World Cup. Stay with the A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. We'll see you on the other side of the break. Hello, assalamu alaikum, good morning and welcome back to the Pavilion. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the Men's T20 World Cup from Australia. और मेरे साथ चार बहुत ही खूबसूरत नौजवान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं. गॉड शोएब मलिक, मिसबाहुल हक, वकार यूनिस एंड वसीम अकरम. बात कर रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के मैच की. द बिग मैच, द बिग गेम, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम. बट बिफोर वी कैरी ऑन अबाउट दैट, लेट्स टेक अ लुक एट द मोस्ट सेंचुरी पार्टनरशिप्स. ये एक स्टैट है हमारे पास आपके लिए. इसके ऊपर ज़रा गौर करते हैं, इस पर बात करते हैं. आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, चल पड़ा है, रास्ते में है, आ रहा है, पहुँच रहा है, आने वाला है. बस ये मोड़ पे घूमा राइट और ये रहा. मुबारक हो. मोस्ट सेंचुरी पार्टनरशिप्स इन T20s. Right on top, it's Babar Azam and Mohammad Rizwan. 45 innings. They've done it 8 times. Then it is right behind KL Rahul and Rohit Sharma. They've done it 5 times in 36 innings. Then you've got again Rohit Sharma playing that with Dhawan. So that's 4 times. They've done it. Finch and Warner have done it 4 times. And Guptill and Williamson have done it 4 times. Does that give us an edge, Misbah, because it is Babar Azam and Rizwan who have the most century partnership? आई थिंक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है ये. 45 इनिंग्स में 8 सेंचुरी प्लस. और T20 में आप नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि 100 रन की पार्टनरशिप आपकी ऊपर ही हो जाए. इसी वजह से आप देखेंगे पिछले जितने भी हम 2 साल से खेल रहे हैं, मोस्टली जो रन्स हैं वो बाबर और रिजवान ही कर रहे हैं और नीचे दूसरे प्लेयर्स को इतना चांस भी नहीं मिल रहा. आई थिंक पाकिस्तान हैवीली डिपेंड्स ऑन दैम. और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, फॉर्म है और उनका ओवरऑल रैंकिंग भी इस टाइम देखें नंबर 1, नंबर 2 इन T20. सो आई थिंक द वे दे आर गोइंग, इट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली इन दिस वर्ल्ड कप दे विल बी मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्पेशली जिस तरह वो बैक फुट पे खेलते हैं, जिस तरह वो कट और पुल दोनों खेल सकते हैं, उन कंडीशंस में आई थिंक और ज़्यादा इनकी ज़रूरत होगी पाकिस्तान को कि ऊपर से रन्स करें. Right. Shoaib, let me bring this next question to you. हमने शुरू में अभी कुछ देर पहले ब्रेक से पहले हम एक स्टैट को देख रहे थे, पाकिस्तान की टॉप 3 की परफॉर्मेंस इन द पावर प्ले. नाउ those stats predominantly come from the United Arab Emirates and the subcontinent, हमारे से पाकिस्तान के अंदर खेलने पे. How do we change an approach? What should be different in Australia now? आई थिंक थोड़ा सा ना अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज जो हम लोगों ने सो फार कंडीशंस देखी हैं इन ऑस्ट्रेलिया, उसमें मुझे ये लगता है कि थ्रू द लाइन शॉट्स बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे. और हमारे जो 2 ओपनर्स हैं वो थ्रू द लाइन ज़्यादा खेलते हैं. थ्रू द लाइन मतलब यह है कि टाइम करके खेलते हैं और गैप्स में खेलते हैं. फर्स्ट 6 ओवर्स में ज़्यादा हवा में नहीं खेलते हैं, unless we are chasing 200, around 200 runs. Babar only has hit 1 6 in 469 deliveries he's Yes, faced in the last 469 year. deliveries. Yeah. Yes. So I guess वो थोड़ी सी एक मुझे लगता है अप्रोच जिसको चेंज करना पड़ेगा, कि जहाँ थोड़ा सा आप फर्स्ट 6 ओवर्स में जहाँ पे 2 फील्डर्स बाहर हैं 30 यार्ड सर्कल के, थोड़ा सा ऊपर से शॉट्स खेलें, ताकि क्योंकि उससे ये होगा कि इजी हो जाएगा आपको थ्रू द लाइन खेलना, आपको स्ट्राइक रोटेशन करना. मुझे लगता है उससे आसान हो जाएगा. Prime example yesterday, this guy, this New Zealander opener, Finn, Alan Finn, yeah. Alan Finn, like we discussed last night, कि पहले ही दूसरी गेंद ऑफ द इनिंग्स जब मिचेल स्टार्क का दूसरा बॉल उसने चौका मारा है, उसके बाद लुक एट दिस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया डिडंट नो व्हाट हैपेंड टू देम, एंड दिस वाज सेकंड ओवर, थर्ड ओवर ऑफ द इनिंग्स, एंड लुक एट दिस. और उससे फिर कम बैक करना बड़ा मुश्किल होता है एज अ टीम, अनलेस यू गेट क्विक विकेट, 3-4 विकेटें मिल जाए आपको, देन यू कैन कम बैक इनटू द गेम, बट नॉट the way they played yesterday. आई थिंक आपने कहा कि ये ज़्यादातर स्टैट्स UAE या पाकिस्तान या यहाँ के हैं, बट रिमेंबर द सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका.
मुझे लगता है कि दैट वाज द बेस्ट बाबर एंड रिजवान प्लेड इन T20 क्रिकेट। 188 चेस किया, 204 देयर बॉलर्स रबादा, उसके बाद नोकिया, वो जिस तरह नोकिया बॉल कर रहा था 145 पे नगीदी। सो मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे ये कर सकते हैं द वे दे प्लेड देयर, आई मीन 65, 64, 65 रन्स पावर प्ले में, दे हैव टू गो विद द सेम अप्रोच। यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे कटर पुल बैक फुट पे स्ट्रॉन्ग है दोनों, माइंडसेट वही रखना पड़ेगा इवन इफ दे आर बैटिंग फर्स्ट। जैसे पहले वकार भाई ने भी बात की, शोएब ने भी बात की, क्लैरिटी। हम कई दफ़ा अंदर जाते हैं जब हम टारगेट सेट कर रहे होते हैं तो हम बीच में सोचते हैं ओके फाइन हम कर लेंगे, एंड पे कर लेंगे। नो, छोटे टारगेट आप सेट करें, 6 ओवर में टारगेट सेट करें आफ्टर 10 ओवर्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप किस बॉलर के ख़िलाफ़ आपने क्या जब टारगेट करते हैं, जो टीम प्लान बनता है वो ज़रूर टारगेट करें आप। आपने लास्ट टाइम उनके लेग स्पिनर को टारगेट किया, इवन लेफ्ट आर्म स्पिनर भी अगर आज खेलता है तो वो चीज़ें फिर आप उसको उसी तरह फॉलो करें फॉर सेटिंग ए टारगेट भी। ऐसे वकार, एक सवाल है, बाबर आजम का एरियल रूट हेजिटेंट है, नहीं प्रेफर करते, जिस तरह के अभी वसीम ने स्टैट शेयर किया कि 469 डिलीवरीज में 1-6 उन्होंने जो मारा है। व्हाई इज दैट? इज इट बिकॉज ऑफ हिज टेक्निक, दैट्स द वे ही लाइक्स टू प्ले, ऑन द कारपेट, कीप द बॉल डाउन? What? Look, he's been brought up in a very good technical way. I mean, from under 19, under 16, he's been told to play a certain way, which is a very very good way. I mean, अगर आप उसकी इनिंग्स टेस्ट मैचेस में, वनडेज में देखेंगे, इवन T20 में जब when he's on song, he's just a amazing player to just visually भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। हाँ, अब ये जो T20 क्रिकेट आ गई है, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। यू हैव टू बी बिट मोर एग्रेसिव, यू हैव टू गो ओवर द टॉप। आपको कई दफ़ा गैप्स नहीं मिलते, और सारी टीमें होमवर्क करके आई होती हैं। दे नो एग्जैक्टली वेयर ही इज स्ट्रॉन्ग, सो दे गोना पुट फील्डर्स देयर, दे गोना रियली स्टॉप यू स्कोरिंग रन्स फ्रॉम दोज एरियाज। सो आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा। इनकी टेक्निक अलाउ नहीं करती समटाइम के टू जस्ट गो ओवर द टॉप। इसीलिए हम कहते रहे ना कि फ़ख्र इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फ़ख्र क्या करता है, फ़ख्र आके ये थोड़े आड़े तिरछे शॉट ज़रूर खेलता है, लेकिन यह है कि वो ही पुट द अदर टीम अंडर प्रेशर अर्ली ऑन इन द गेम। सो आई थिंक Fakhr was important, unfortunately नहीं है, but they have to really play the way they played against India. I mean, that was positive. No, even जैसे अभी ये कह रहा है, मिसबा ने बताया बाबर का स्ट्राइक रेट 143 का था साउथ अफ्रीकन सीरीज में, और रिजवान का 147. We want this बाबर एंड रिजवान टुडे इंशाल्लाह। Also, बाबर और विराट सिमिलर खेलते हैं, वो भी थ्रू द लाइन खेलता है, पेस यूज़ करता है और स्ट्राइक रोटेशन करता है बहुत ज़्यादा। लेकिन फ़र्क जो मुझे नज़र आता है वो बाबर आजम के अराउंड जो बैटर्स हैं और जो विराट के अराउंड बैटर्स हैं उनमें डिफरेंस है। बिल्कुल सही। इसीलिए वो विराट को अलाउ करते हैं वो वाला गेम खेलना। लेकिन बाबर के केस में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये है कि बाबर के टाइप के ही जो है ना वो उसके जो अराउंड खेलते हैं, जैसे दूसरा ओपनर है या जो नंबर 3 पे आता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड करूँगा कि देखें, बात यह है कि आप ये भी एक स्टार्ट है कि जब 15 बॉल विराट कोहली खेल जाता है, ठीक है इनिशियली सम टाइम उसका वो स्ट्राइक रेट नहीं होता, लेकिन आफ्टर प्लेइंग 15 बॉल्स या 10 से 15 रन्स करने के बाद क्लियरली एक डिफरेंस आपको उसके स्ट्राइक रेट में नज़र आता है। उसके बाद वो उसको पुश करता है अगली टीम को और वो उसको ले जाता है 135-40 पे। इधर मुझे लगता है कि रिजवान और बाबर को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम कई दफ़ा 6 ओवर्स में चलें 50 कर लेते हैं, बट उसके बाद हम जो अगले 4 ओवर हैं, जस्ट लाइक सेमीफाइनल पिछले वर्ल्ड कप का, वहाँ पे हमने वी अलाउड मैक्सवेल टू बॉल। वहाँ पे मुझे लगता है जस्ट पुट योर फुट डाउन कि हमने 200 अगर करना है तो हमने यहाँ ये नहीं सोचना कि अब विकेट बचानी है। जो बंदा उस टाइम आपका मैचअप आता है उसको वहाँ पे आप उस पर अटैक कर दें। 7, 8, 9 जो ओवर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली डिसाइड करते हैं कि आप 180 की तरफ जा रहे हैं या आप 160 की तरफ जा रहे हैं। तो जो उनका पॉइंट है बहुत वैलिड पॉइंट है। जो आपका 7, 8, 9 है उसमें अब ये अगर 2 बैटर्स खेल रहे हैं, ये उन्होंने डिसाइड करना है कि कौन सा बॉलर किसको सूट कर रहा है, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट करें एंड देन गो आफ्टर द बॉलर। यू आर बेसिकली सेइंग कि अगर आपके पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरी या 1 विकेट गिरी है, तो फिर जो 7 से लेके 10वां ओवर या 12वें ओवर था ना,
you can't just go run a ball. You have to really push them and get those big overs. Batting order change kar do. Send play like Haider Ali. Tell him, go play your game, sensible but go hit. मैं ये कहना चाहता हूँ वसीम, look, even in our discussion, our discussion also revolves around Babar and Rizwan. And we're talking about how they should apply themselves. Actually, whereas our concern is as we go down the order, there is, you know, a lot to be. इफ्तिखार है, हैदर अली है, फिर आपके पास शान मसूद है, फिर उसके बाद आपके दो आसिफ अली है, फिर दो उनके हमारे ऑलराउंडर आ जाते हैं. सो बैटिंग तो लंबी है, बट आई थिंक ये कप्तान कोच को बैठ के उन्हें रिलैक्स तरीके से बताना पड़ेगा, गाइस जस्ट एंजॉय योर गेम, गो आउट, प्ले योर शॉट्स, डोंट वरी अबाउट व्हाट विल हैपन. अगर हारना है तो दलेरी से भी हारना है ना, ये नहीं कि शल में चले जाना है. Which we saw yesterday for Australia. Yeah. They, even when the wickets were falling, they were just going off. They were trying to go after the target. 10 ओवरों में हार जाओ. And Waqar had a very good thing he said yesterday. Look, you might lose ugly, but that definitely keeps your momentum, you know, intact, your mind intact. That's how Australia plays, and that's how they are going to play. It's the way we played the finals in Asia Cup. Yeah. We were chasing 170 odd, we lost early wickets, and then we just blocked. So that's where the mindset is very important. आप 10 ओवरों में हार जाओ, because हमारी पब्लिक को, हमारे व्यूज़ को पाकिस्तान में क्रिकेट की अकल है. They love their cricket, they love their team. So, you know, lose in 12 overs, nobody will care. But there's no point lingering on till the 20th over and loss. You lose by 50, 40 runs. The last ball. Yeah. Also, वसीम भाई सब जगह नहीं खेलते, इसीलिए ना वो जो कंसिस्टेंसी है ना वो नहीं आती. सब जगह खेलने का मकसद ये है कि आप मतलब सिर्फ ऑन साइड पे खेलते हैं जो राइटीज़ हैं, और जो लेफ्टीज़ हैं वो अपने ऑन साइड की तरफ खेलते हैं. पूरा ग्राउंड आप यूटिलाइज करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. So the next question is, can they are good enough? That's why they're in Pakistan team. They can play both sides of the square. So why don't they? I guess वो अपना ना जोर यूज करने की कोशिश करें. जब आप जोर यूज करते हैं तो या आप मिड ऑन मारते हैं या आप मिड विकेट मारते हैं. अब बाकी एरिया बिल्कुल बॉटम एंड आ जाता है बीच में. आपको कवर्स में भी खेलना पड़ेगा. देखिए वसीम भाई, जब आप बॉलर हैं, आपको अगर पता है कि एक बंदे ने मुझे 2 जगह पे शॉट मारना है, तो आप वैसे ही बड़े दिल से आओगे, चल यार एक मार ले, दूसरे में मैं तुझे आउट कर दूंगा. तो इसीलिए जब आप बॉलर को भी सोचने का ना मौका मिलता है, और वो भी सोचता है यार ये तो मैं इसे आउटसाइड ऑफ स्टंप करता हूँ, ये मुझे वहाँ मारता है, मैं इसे बीच में करता हूँ, ये सामने मारता है, मैं इसे बॉडी में करता हूँ, ये ऑन साइड पे मारता है, तो ये बहुत मैटर करता है. प्राइम एग्जाम्पल है कल की जो फिन की इनिंग्स है. यू नो, अगर उसकी दोबारा एक बार देख सके तो वो आप देखेंगे कि जो उसकी हिटिंग थी, it was more towards either straight or toward cover, extra cover. He wasn't really pulling. पहले 6 ओवरों में उसने पुल किए हैं बॉल, लेकिन वो जो बिल्कुल उसके हिप पे आए या उसके शॉर्ट ऑफ लेंथ. अदरवाइज जो वो गया है, just look to there you go straight, and then you watch him play another one nice and straight. There you go, nice and straight. So he wasn't really there you go. I mean, that's what you need to do. ये तो बुरा बॉल था, but overall if you look at his inning, he gives himself a little bit of space, and और वो एक्सप्लॉइट करता है ऑफ साइड को. ऑफ साइड में क्या होता है कि फिर आपका बल्ला पूरा फेस मिलता है. इधर ऑन जब खेलते हो आप तो आपका बल्ला बंद हो जाता है. यू बेसिकली हिटिंग विद हाफ अ बैट और 3/4 बैट. हिस्ट्री है ना विकी भाई. अब देखें जो न्यूजीलैंड टीम है, उनके अगेंस्ट ये प्लान नहीं होगा कि हम इसे शॉर्ट बॉलिंग करेंगे. ठीक है, हमारे अगेंस्ट इस प्लान से आएंगी मोस्टली टीम्स के हम इनको शॉर्ट बॉलिंग करें. सो बेसिकली एज अ बैटर आपको पता है कि आपके फ्रंट पे क्या आना है, तो आप पहले से ही कोई ऐसी चीज़ करें कि जिससे आप यू आर ऑलरेडी सेटल फॉर शॉर्ट बॉल. आगे कोई आ गया तो ठीक है, आप रोक के एक कर लें, बट यू आर रेडी कि जिसको एक्सप्लॉइट करेंगी मोस्टली टीम. देखिए, एज अ बॉलर, इफ आई एम बॉलिंग से प्रेजेंट प्लेयर पाकिस्तान का ले लो मिडल ओवर्स में से आसिफ और इफ्तिखार, इफ आई एम बॉलिंग एट देम, आई नो कि ना इन्होंने रूम लेना है ना इन्होंने क्रॉस जाना है. वो बुरा बॉल होगा, वो मारेंगे मिड विकेट या मिड ऑन. आसिफ को थोड़ा इधर करूँगा तो वो उधर भी मार सकता है. सो मुझ पे इतना प्रेशर नहीं होगा. मुझ पे कोई आगे बैट्समैन होगा जो इधर जाएगा या इधर जाएगा, या रूम देगा या क्रॉस जाएगा या निकलेगा. सो while running in, I'll have 5-7 things in my mind. Hardest batsman to bowl is the one who just moves away from the stump, the one who shows you the stumps and look to hit through the cover or cover point. Australia में तो even more, because the ball through आता है, bounce आता है, that you can go over the top.
All right, folks, you are watching the Pavilion on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We are going to be talking about the two games today. Firstly, we're talking about the big game, India versus Pakistan. Batting की तो बात हो गई, break के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की bowling की. देखते रहिए A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फख्र आलम और आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app. It's the big day and the ICC Men's T20 World Cup. We've got Ireland clashing with Sri Lanka up first and then the big game Pakistan versus India. उसके हवाले से हम बात कर रहे थे. ब्रेक पे जाने से पहले Misbah, I wanted to come back to you and talk to you about, does Pakistan play with 4 fast bowlers today? मुझे नहीं लगता टीम कम्बिनेशन मुझे लगता है डिस्टर्ब होगा. अगर हमारे पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होता तो देन आई थिंक कि एक बैट्समैन कम करके हम उसको खिला सकते थे एज अ 6th ऑप्शन कि कहीं पे भी हमारे पास अब 3 फास्ट बॉलर्स का कोई बैकअप नहीं है. किसी एक की अगर बॉलिंग अच्छी नहीं होती या थोड़ा कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो आपके पास फास्ट बॉलिंग बैकअप नहीं है. आपके पास जो एक्स्ट्रा बॉलर भी हैं, इफ्तिखार है, वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है. ऑस्ट्रेलिया में आपको चाहिए थी फास्ट बॉलिंग ऑप्शन. तो मुझे लगता है जो टीम खेलती हुई आ रही है, 2 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर, दैट इज़ द कम्बिनेशन. आपके 6 बैट्समैन हैं. आई थिंक दैट पता था कि वर्ल्ड कप आ रहा है, पता था ये हो रहा है साल पहले, 1.5 साल पहले. सो तब से क्यों नहीं तैयार किया किसी ऑलराउंडर को? फॉर आर्ग्यूमेंट से सिर्फ फ़हीम अशरफ ले लो, हमारे पास और आमिर यामीन है ऑलराउंडर. आमिर यामीन रियली हैज़ टू इम्प्रूव हिज गेम. आई मीन लास्ट ईयर विद कराची किंग्स we weren't scoring runs of batters. He went at number 5, he went at number 6. 11 overs to go, but पहली गेंद पे छिक्का, फिर आउट. ऐसे बैटिंग नहीं होती बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में. वसीम भाई, आई थिंक दैट इज़ द मिस्टेक एंड दैट इज़ सम टाइम वो जो हमारी प्लानिंग है. आप जब 2 साल पहले या 1 साल पहले से क्रिकेट खेल रहे थे तो पहले भी हमारा वर्ल्ड कप था तो वी वर इन्वेस्टिंग फॉर द वे टूवर्स ऑन फ़हीम अशरफ टेस्ट मैचेस में भी, क्योंकि वो एक बैलेंस आपकी टीम का सेट कर देता है. चौथा, अगर आपके पास सीमर है, साउथ अफ्रीका में फ़हीम वाज वेरी गुड विद द बॉल और स्पेशली उसकी जो बैटिंग भी है बैकफुट पे सबने देखा है. न्यूजीलैंड में उसने रन्स किए हैं, कट और पुल अच्छा खेलता है वो. और अगर आपका बैट्समैन आ रहा है, इवन इफ्तिखार आ रहे हैं, आसिफ अली, जस्ट फॉर 2 ओवर्स, तो उस पे तो मेरे ख्याल में फ़हीम बेहतर ऑप्शन है कि फास्ट बॉलर लगे हुए हैं एंड पे आके अगर उसने 10-7 गेंद खेलने हैं. नाउ इट्स टू लेट. आई थिंक नाउ थिंग्स यू विश. प्लानिंग की बात करते हैं ना हम, प्लानिंग क्या होती है, फ्यूचर टूर्स क्या हैं, किस प्लेयर ने कहाँ काम करना है. सो वो कप्तान का भी इन्वॉल्व होना उसमें बड़ा ज़रूरी होता है. सो 3 फास्ट बॉलर्स बन सकता था अगर जो मोहम्मद वसीम है, अगर इन्होंने अपनी बैटिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव किया होता, ये जो सारा टाइम था, तो आप सोच सकते थे. भी नेट्स में बैटिंग इम्प्रूव नहीं हो सकती. आपको उसके लिए लंबी 4-डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, उसमें जाके स्कोर करना पड़ेगा. देन यू कैन गेट रन्स इन T20. दैट्स सिंपल. उसी में मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि बंदे को 2-3 साल खिलाओ, उसके बाद टीम में लेके आओ. नहीं, जैसे अभी तो T20 स्पेशलिस्ट है, रेडी होके आता है. जैसे T20 स्पेशलिस्ट है, हारिस है या आमिन शाहीन तो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, नसीम भी खेलता है, पर हारिस डजंट. बट ही शुड बी प्लेइंग फर्स्ट क्लास. दिस हसनैन, ऑल दीज गाइज, थोड़ा रगड़ा लगे, थोड़ी रिदम आए, थोड़ा पता लगे बॉलिंग क्या होती है. स्लो विकेटों पे 8-8 ओवर का स्पेल करें. बिल्कुल. अभी 4 ओवर के स्पेल से आपने क्या इंप्रूव होना है, नेट्स में क्या इंप्रूव होना है. मैच प्रेशर इज टोटली डिफरेंट. देखिए वसीम भाई, आर्गूमेंट ये होता है जब आप फ़हीम की बात करते हैं तो हमेशा कि जी उसकी एवरेज 15 दी है या 12 दी है या 17 दी. अब एक बंदा अगर 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है और उसने आके खेलना है 10 ओवर 12 ओवर एंड पे, उसको 4 बॉल मिल रहे हैं, 5 बॉल, तो उसका क्या काम है. साउथ अफ्रीका में उसने 2 मैच हमें जिताए. एक छोटी सी आगे कैमियो खेली कि ठीक है जी, उसने 15-20 रन क्विक फायर कर दिए और साथ उसकी बॉलिंग इकोनॉमी देखें, वो बैक ऑफ लेंथ करता है इन कंडीशंस में जहाँ बाउंस होता है. विकी भाई थे, ही वाज वन ऑफ द बेटर बॉलर्स देयर, इवन T20 में भी और वनडे में भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था. स्पेशली जब ऐसा बैट्समैन जिसने न्यूजीलैंड जाके प्रूव किया हो कि यार वो टेक्निक भी है, खेल सकता है, तो उस पर मेरे ख्याल में इन्वेस्ट करना, स्पेशली
वो टीम में ज़रूर होना चाहिए Squad साथ, में। ताकि अब जैसे ये मैं एक साल पहले से ये कह रहा था कि ये सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया में आएगी और स्पेशली अगेंस्ट इंडिया आएगी। और हम अगर आप पुराने प्रोग्राम्स देखें, मैं उस टाइम से कह रहा था कि आपको अभी से प्लान करना है कि ये आपको ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए, वरना वहाँ पे हम सोचेंगे हम 4 आज का फास्ट सोचते बॉलर हैं, खिलाने हम आज बहुत का मुश्किल सोचते है। हैं, हम ये तो बैलेंस वही आउट बात हो हो जाए। गई, जैसे हम कहते हैं सारे पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, कि पाकिस्तान टीम कंसिस्टेंट क्यों नहीं है। अबे हम भी पाकिस्तानी है ना, इट्स पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। What's consistent in our system? Nothing. So that's what Pakistan team is all But about. also, वसीम, आपने बड़ी अच्छी बात की जो आप कह रहे थे ना कि प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग की बात होनी चाहिए। तो जिस तरह वसीम ने कहा कि वो जब ओलंपिक सर पे आएंगे तो उस वक्त फिर बात होगी जो ओलंपिक की तैयारी, जब ओलंपिक हाफ पे आ जाएगा, हाफ पे आ जाएगा कि क्या कोई हुआ एक कि आधा नहीं मेडल हुआ। हमारा Waqar, let me bring this Swimmers के conversation to you, Yeah. Waqar. Here is the question. What is, Haris Rauf has played in the Big Bash, has done really well for himself in the Big Bash, and has is a star performer in the Big Bash. इनकी आपकी स्क्रीन पे इस वक्त स्टैट्स भी नजर आ रहे होंगे। Does that bring in a lot to the table for Team Pakistan today? Haris Rauf's experience in Australia? Look, I think it all started from Australia. Yeah. जब ये ऑस्ट्रेलिया खेलने गया and he started picking up wickets and started feeling good about himself. I think the bigger stage इसको help किया है and Big Bash was a big stage for him at the time, and then of course he came back, Lahore Qalandar से खेला. It's been a big success, और especially in that pack he becomes really lethal, क्योंकि ऊपर से शाहीन अच्छी बॉलिंग करता है, अब नसीम भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छा करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के दोस्त भी हैं, दे नो देयर बॉलिंग एंड they talk about their bowling also, so I think that's a very very good sign. Wasim bhai, me and जब हम लोग भी खेला करते थे तो we used to talk a lot about bowling, how we gonna do it, इस पे कैसे करें. So I think that is coming back in this team which I have gathered, कि ये लोग they talk about it, they communicate, they एक्सपोजर मिला, इसका मतलब है लीग खेलने से। आपने कहा वो अभी Big Bash हारिस खेलने रऊफ से? को, जी हाँ, He played league before he played Pakistan, am I right? That is correct. The Yeah, Big yeah, Bash league, yeah, because yes. of Lahore Qalandars. हमारे यहाँ पे भी जो हमारा PSL है, if we look at leagues all over the world, तो यहाँ पे सिर्फ बैट्समैन आते हैं बाहर से, बॉलर्स नहीं आते हैं। बॉलर्स हमारे लोकल्स होते हैं, तो इसलिए हमें हमारे बैट्समैन बैटर्स आज भी तक मिला क्यों नहीं? मुझे 7 PSL में से एक यंग बैट्समैन बता दो तुम। मुझे एक emerging में कोई बैट्समैन मिला आपको पिछले 7 सालों में? Shabi, let me answer your question. You said कि बाहर एक्सपोजर जो है वो बाहर से मिलता है. Of course मिलता है. मैं काउंटी खेला हूँ. वसीम भाई इतने साल काउंटी क्रिकेट खेले, and I think you played a lot of cricket, but not at the expense of first class cricket, not at the expense of your local tournament, because local tournament is the one where you should be getting selected from. Right. We should respect that. It's very important to respect that. It's very important to respect the clock, because the clock is telling me that it's time for us to take a break on the Pavilion. Keep watching A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. When we come back, we're going to talk about Ireland versus Sri Lanka. Don't go away. Welcome back from the break. I'm Fakhr और आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. It's the continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We were talking about the Pakistan-India game, and then we're going to talk about the Sri Lanka-Ireland game. But before we do that, let's take a look at what our panelists think should be the playing 11 for Pakistan today. ये आज की पाकिस्तान की playing 11 जो है वो more or less हमारे panelists ने इसके बारे में लिखे. Misbah, why don't you read it out to us? What do you think? I think it's the same team जो कि हम वहाँ पे भी खेल रहे थे न्यूजीलैंड में. बाबर रिजवान opening the inning, and then Shan Masood, and then obviously Haider Ali, Shadab, Iftikhar, Nawaz, Asif Ali, and the 3 fast bowlers, Shaheen, Naseem and Haris Rauf. There are ideas floating कि हम चौथा फास्ट बॉलर खिला लें अगर वसीम जूनियर को खिला लें, बट आई थिंक इतने बड़े प्रेशर गेम में सडनली एक कम्बिनेशन आपने कितने अरसे से खिलाया ही नहीं है. हाँ. अगर यही चेंज आप करते हैं तो अचानक से एक पैनिक स्टार्ट हो जाती है. आई मीन इट जस्ट गिव्स अ मैसेज टू द टीम एंड अपोजिशन ऑल्सो कि कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पे खिलबिली मच गई है टीम में. आई थिंक बी कॉन्फिडेंट. जो आपको लग रहा है कि हमारा एक अच्छा कम्बिनेशन है,
उसके साथ हम जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि जब आप इतनी ज़्यादा बैटिंग यानी 8 नंबर तक आपके पास बैट्समैन है, देन मेक द मोस्ट ऑफ दैट। फिर आप ये ना करें कि 150 वाला मैच खेल रहे हैं, इतनी बैटिंग को फिर यूटिलाइज़ करें। कोशिश करें कि आप वो टारगेट एटलीस्ट अगर सेट कर रहे हैं तो वो टारगेट अपोजिशन को दें जहाँ पे फिर आप इस बॉलिंग के साथ उसको डिफेंड कर सकें। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बेस्ट यही है। मेंटली भी आप ठीक होंगे, रिलैक्स हो गए इसमें, और ये लड़के खेलते हुए आ रहे हैं। तो समहाउ मुझे लगता है कि अभी जो लास्ट फाइनल हम खेल के आए और जीत के आए, वहाँ पे जिस तरह मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया है, इट वाज वेरी गुड फॉर पाकिस्तान कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, एंड स्पेशली पहला मैच भी हमारा जो है वो इंडिया के साथ है। तो हैदर भी कॉन्फिडेंट होगा, उसके बाद नवाज इज परफॉर्मिंग वेल, शादाब इज परफॉर्मिंग वेल, और ओपनर्स तो वैसे ही अच्छा करते हैं। क्वेश्चन पूछ लूं प्लीज? एक्चुअली पिच रिपोर्ट पे जाना है हमें। पहले मैच की श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड, वी रेडी फॉर द पिच रिपोर्ट। सो देयर इज द फर्स्ट मैच टुडे। गुड मॉर्निंग वसीम, वेलकम टू द पार्टी। पूरी गल कर लो थोड़ी जी। That's what I meant. So here's the pitch report brought to you by Ensure. Oh, wonderful to be back here at Bellerive Oval once again for this round one action in the Super 12. Now, we're standing on the pitch on which the last day's action took place in round one, Group B. And what that means for the dimensions is that towards the grass banks is the shorter of the two boundaries, 60 meters. The opposite side, much bigger, 69 meters. And then even more of a stretch down the ground, 82 meters. So if you're pumping it down there, be careful of that. But also compounding that is a strong wind coming off the river end up towards the north. And that's blustering. However, Dirk Nannes knows these conditions much better than I do. What does that mean, Dirk? Good to see you again. And for the game and for the surface. Well, that's Antarctica that way, Bish, so keep the jacket on. Feels like temperature today is 6 degrees. So I think on a surface like this that seems to be so true, I think Sri Lanka are going to want to bat. I think Ireland are going to want to chase. Now, coming down to the surface, I mean, that is a solid Bell Reeve block of cement. It's a credit to the groundsman to get such a firm pitch so early in the season. The bounce is going to be true. There might be a little bit of spin, not too much. I think 160 is about par. Probably the biggest factor, because this won't break up, is going to be the way the teams play these shorter boundaries and the wind. For me, that's the game within the game. All right, and we've had so much wonderful action in this Men's T20 World Cup 2022. Long may that continue and into today. Right, there you have it. That's the pitch report for the Sri Lanka versus Ireland game. Up first, 6 degrees Celsius मौसम. उन्होंने पिच रिपोर्ट बहुत ज़बरदस्त दी है. There's a game within the game. There is a game within the game. मतलब क्या कर रहे हैं? कैरम बोर्ड भी होगा वहाँ पे. कैरम बोर्ड के बीच में सब कुछ उन्होंने टीमों पे डाल दिया है. उन्होंने कहा कि साढ़े दिन रहना. पिच ने कुछ नहीं करना, जो करना टीमों ने करना. 6 degrees is quite chilly. It is chilly. And 6 means you feel about 3 with that wind blowing from Antarctica, whatever he said. इसीलिए Ian Bishop बिल्कुल नहीं बोल रहे थे. Yeah, Tasman Sea is one of the most coldest waters in the world and the choppiest waters in the world. Yeah, so that makes life a little difficult for the players. I assume the sun is out though. आयरलैंड के लिए मसला नहीं होगा. हाँ, ये भी है. श्रीलंका के लिए मसला है. Playing 11 पूछ रहे थे आप. अभी आएगी, टॉस के बाद आएगी playing 11 हमारे पास. सबकी playing 11 for Pakistan. Remember you asked one question and मैंने कहा सब तो आपने कहा combined है या आपकी अलग है कोई, आप बता सकते हैं बिल्कुल. अच्छा नहीं, combined यही टीम बनती है बिल्कुल ठीक है. मैं अब एक क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों से प्लीज. अगर यही कॉम्बिनेशन है तो जैसे नसीम शाह है, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नवाज एंड शादाब, ये हमारे 5 बॉलर हैं. नया बॉल कौन करेगा शाहीन के साथ? शाहीन के साथ नया बॉल कराना चाहिए नसीम शाह को वहाँ पे. और जो हमने स्टैट्स देखे हैं इंडियन बैटर्स के, वो अगेंस्ट स्पिन बहुत अच्छे हैं. तो आप मिडिल ओवर्स में उनको इतने स्पिनर्स देना चाहते हैं? Look, you can't go with this mindset कि मिडिल ओवर में उनके स्टैट अच्छे हैं तो शायद वो इनको मार पड़ जाए. But that's what it is. You got to go with your not thinking कि आखिरी 15 में क्या होना है, सोचना है कि मैंने पहले 5 में क्या इम्पैक्ट डालना है एज अ टीम. अगर वहीं आपने 2 विकेटें ले ली तो आपके स्पिनर्स आराम से बोलेंगे. लास्ट टाइम नवाज ने आउट किया हुआ है उसको, रोहित शर्मा को, विराट को और एक और सारे बाउंड्री पे आउट हुआ है ना, इफ यू रिमेंबर.
But I'm talking. आई थिंक कि जो वसीम भाई लास्ट हम ओवरऑल रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है इनका, लेकिन जो वर्ल्ड कप का पिछला जो लेटेस्ट मैचेस जो पाकिस्तान उनके अगेंस्ट खेला है, शादाब ने और नवाज ने अच्छी बॉलिंग की हुई है, सो दे विल बी कॉन्फिडेंट. And कहीं ना कहीं आपको secondly, 1-2 ओवर शायद नवाज These को कराने stats are good for us guys to talk about, but as a player, in our time, I don't know, times have changed maybe. मुझे याद नहीं पिछले साल मेरे इंडिया से मैच में क्या परफॉर्मेंस थी किसी प्लेयर की या मेरी. इतनी क्रिकेट हो रही होती है. सो आई थिंक प्लेयर्स नाउ डेज प्रॉब्ली और राइटली सो फोकस के मैंने आज क्या करना है. ये नहीं कि साल पहले क्या हुआ था. That was year ago. Different condition, different pitch, maybe different playing 11 you're playing against. To focus what I'm going to do today, जो आज मेरा मैच है. आज क्या फोकस होगा वकार इन सब का? उनकी वैसे भी टीम डिफरेंट है. जी वकार, आपकी प्लेइंग 11 डिफरेंट है? प्लीज शेयर. नहीं, आई ऑलवेज फील कि हम लोग बॉलर शॉट हैं. आई मीन ठीक है, आई अंडरस्टैंड जो मिसबा ने बात की कि यू नो एक रिदम से आ रहे हैं, खेलते हुए आ रहे हैं, सो जस्ट कैरी ऑन विद इट, दैट्स फेयर इनफ. बट लेकिन मैं समझता हूँ कि यू नो अगर आसिफ 8वें नंबर पे आ रहा है या 7वें नंबर पे आ रहा है तो यू बॉल बैट्समैन हैवी, यू बॉलर शॉट, दैट मीन्स. सो आई फील कि जो आपको पास चौथा एक 5-6 बॉलर होना चाहिए. यू नो और ये नहीं समझ मुझे आ रही कि हम नवाज़ पे और शादाब पे कब रिलाई करेंगे उन बैटिंग. आपको वो दिस लास्ट पिछले कुछ मैचों में उन्होंने प्रूव करके दिया. नवाज ने तो ऑब्वियस प्रूव किया है. शादाब भी जब ऊपर गया, तो अगर आप ऊपर उनको भेजते हैं एंड दे स्कोरिंग रन्स एंड देन व्हाट इज द स्केयर, व्हाट इज होल्डिंग यू बैक. लास्ट मोमेंट टू चेंज एनीथिंग. दे शुड अगर ये करना था तो ये न्यूजीलैंड से ये प्लेइंग 11 अपनी चांस भी लेते, ट्राई भी करते 4 फास्ट बॉलर्स. यू नो ट्राई करना चाहिए था कॉम्बिनेशन. वो तो खैर मैं बहुत पुराना लगा हुआ कि यू शुड यू नो हमें ओपनिंग में भी हमें करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया. वी जस्ट वेंट विद वन फ्रेम ऑफ माइंड एंड वी just carry on like that. It's not gonna happen what I'm saying, but this is how I think. Okay, that's fair enough. That is that school of thought which says that we should have that extra bowler. Yeah. Yesterday for New Zealand and Australia, there was that difference right there. They had bowlers. There were 8 bowlers in their side. Yeah. Even New Zealand के पास भी extra options होती हैं. Even England के पास 7-8 bowlers हैं जो सारे bowling कर लेते हैं और and good bowlers हैं. So always have the option कि किसी का there might be 1 or 2 guys who will really have a bad day. Shaheen might have a bad day. He hasn't played any cricket. Haris can have a bad day. So एक कहीं ना कहीं एक option रखना ज़रूर चाहिए. All right, and with that, we're going to take you back into the ground where Ian Bishop is walking out with both the captains and a coin to do the toss, brought to you by Dettol. Ireland winning the toss, selecting to bat. Waqar, what do you think is in their mind? Put runs on the board. I mean, टीमें ऐसी हैं कि जो you know they can really cause issues and trouble for other teams, bigger teams. Sri Lanka, of course, they're going to turn into a bigger, different beast now. I feel that क्योंकि कई दफ़ा आप जब छोटी टीमों से खेल रहे होते हैं, क्वालिफायर खेल रहे होते हैं, आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहता है कि you know बाहर ना हो जाओ, वेस्ट इंडीज़ होगी ना. So I feel कि they will play much better cricket. But yeah, I think it's a good decision for a associate team because if they got a decent runs on the board and pick up early wickets, Sri Lanka can be in trouble. So that's what they're playing with. Yeah, and for Sri Lanka, Wasim, how do they approach this game? This is good toss to win by Ireland, and I think they have planned it against teams like Sri Lanka. कि यहाँ टॉस जीतेंगे, बैटिंग करेंगे, और हमने देखा है कि यहाँ पे बॉल हल्का सा सीम होता है और उनके पास बॉलर ऐसे हैं जिसे हम पंजाबी उर्दू में टुचा कहते हैं, मीडियम पेसर जो उसी लेंथ पे मारते रहते हैं. अगर आप उन बॉलर्स को अगर आपने अपसेट नहीं किया अपनी बैटिंग से निकल के साइड पे हट के और 2 विकेटें अर्ली उन्होंने ले ली, एंड डिपेंड व्हाट्स आवर टोटल दे पोस्ट बिकॉज द मेन प्लेयर इज बैक इन निक स्टर्लिंग. सो या it'll be a good game. It's a good toss to win in my opinion. Misbah, ये playing 11 आ रहा है, ये उस पर नज़र डाल लेते हैं. Take us through these playing 11s, please. First up is Ireland. Sterling, I think the way he batted in the last game, Balberni, बहुत अच्छा start दिया. Tucker, they got runs in the last game. Hector, Camphor ने already एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है डॉकरेल के साथ मिलके. Delaney ने bowling बड़ी ज़बरदस्त की last match में. Adair, Singh, McGrath, Little. I think ये bowling lineup भी इनकी काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइन, अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं. तो बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस टीम, स्पेशली आफ्टर द लास्ट गेम द वे दे जस्ट वन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़. आई थिंक
they are more confident now और श्रीलंका को tough time दे सकते हैं. Very good thing. Right, and Sri Lanka, Waqar, take us through the Sri Lankan squad, please. I mean, Dhananjay is a very good all-rounder. I mean, और अच्छी बात यह है कि in form आ रहे हैं. You know, we all know that they're very, very fine side. They got a good bowling lineup. Also, they had few injuries. No doubt they have brought in some new fast bowlers, but their spin attack and their fast bowling attack, they're getting better. And this team, I'm sure they will play much better cricket what they have played so far. But Nisanka is missing, and that is going to be a big blow for them. All right, and with that, we are going to take a break on the Pavilion. Keep watching A Sports and Sports and the ARY Zap app. We'll see you on the other side. Welcome back from the break. मैं हूं फखर और आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports and Sports and the ARY Zap app. And now we're getting to the business end of the tournament. This is the Super 12. We've got the first match coming up. Ireland versus Sri Lanka. Ireland टॉस जीत चुका है. श्रीलंका बाद में बैटिंग करेगा. This is going to be an interesting game. But हम लोग बात कर रहे हैं. अब आइए जरा नजर डालते हैं अपनी expert predictions पे. Brought to you by Olivia. शुक्रिया. All right, Shoaib, for you, what is your expert prediction for today? First match. जापानीज तोता एंड पे आता है वैसे. चलें जल्दी बताएं. अभी टाइम हमारे पास कम है. Get on with it. सर श्रीलंका एंड ऑफ कोर्स ये जो कलर पहना हुआ है पाकिस्तान. ऑल राइट, ये दिल और दिमाग दोनों का बैरोमीटर इस्तेमाल किया जा सकता है. अच्छा वकार दिमाग कुछ और कह रहा है. चेक करें. जी I'm going to stick to the same. Same. श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान. ओ सॉरी, वर्सेस कह रहा हूँ. मिसबा जापानी तोते को हराना है तो उसके लिए चांस तो लेना है. मैं आयरलैंड पाकिस्तान. आयरलैंड पाकिस्तान एंड इंडिया वसीम. की तरफ कोई नहीं जा रहा. सर वो कहते ने ना होवे बांदर ते डाई ना मारे. आयरलैंड एंड पाकिस्तान. चांस ले तो बड़ा ले. बड़ा रिस्क ले. There are your expert predictions brought to you by Olivia. शुक्रिया. As a captain. कार भाई से नहीं पूछा आपने. पूछ लिया यार. मिसबा गुड मॉर्निंग. मैं वेक छोटा अप. जवाब सबसे देता पूछ हूँ. लिया भाई. क्या हो गया है? नहीं पूछा. मैं हमेशा छोटा हाँ? जवाब देता हूँ. Okay, folks, it's getting a little hazy in here because सुबह 7:30 बजे का शो था. 5:30 बजे के जागे में बहुत सारे लोग रात 12 बजे सोने के बाद. But we thank you all for joining us here on the Pavilion. We've got the expert predictions are in. 2 big games. First, Ireland versus Sri Lanka, and then it is the big clash, Pakistan versus India. We wish the fans on both sides of the border best of luck. May the best team win. But remember, cricket brings us all together. And the idea should be that we celebrate the game of cricket and that we celebrate the sportsmanship always. And also, the idea is to celebrate this great coming togetherness of all the teams from around the world. We've got another song for you. Listen to that and then we go into the cricketing action. And we'll see you on the other side of both the matches at the end of the day.